Hello students, today we are going to study the poem Keeping Quiet from our book Flamingo. The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals, and environment. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. Now let's see the poem, the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. The poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. Maybe this 12 referred by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months in an year. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak any language, as we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth, which sometimes became a barrier in our way for peace. So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving our arms. By using the words arms, he means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other. So basically, the poet is demanding peace from all of us. यहाँ पोएट ने 12 तक काउंट करने के लिए बोला है. 12 या तो 12 आवर्स हो सकते हैं या 12 मंथ्स हो सकते हैं, और वो कहता है कि हमें काम डाउन रहना है, शांत रहना है, हमें किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर. वो हमारे बीच में बैरियर का काम करती है लैंग्वेज, बिकॉज ऑल द नेशंस स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस. ना वो थर्ड चीज़ कि हमें अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है. यहाँ आर्म्स दो चीज़ों को रेफर कर सकता है, फर्स्ट आवर हैंड एंड द सेकेंड थिंग्स द वेपन्स. तो पहली चीज़, आर्म्स का इस्तेमाल सिग्नल के लिए भी नहीं करना है, हैंड का इस्तेमाल सिग्नल के लिए नहीं करना है. मीन्स हमें कोई लैंग्वेज बोलना भी नहीं है, ना ही हमें किसी सिग्नल में बात करना है. एंड द फोर्थ थिंग इज दैट वी शुड नॉट यूज द वेपन्स. और हमें क्या चाहिए इस धरती पे? पीस चाहिए. नाउ लुक एट द सम लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर. Now we will count to 12, and the another one is and not move our arms so much. So here is the proficiency of O and E letters. So we can say that here is assonance. The second one, let's not speak and let's stop. So these two lines are starting with the same word let. So here it is anaphora. And another one, we will. So here is the same initial sound W. So here it is alliteration. So these are the devices, you can note it down. Now moving to the second stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a certain strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now let's understand. Poet says that it would be a rare situation when there will be no engines working. अगर हम हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, सो द ऑल द इंजन्स जो भी हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं
दे आर ऑपरेटेड बाय आवर हैंड्स, वो अपने हाथों से ही उनका ऑपरेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे एंड दैट विल बी अ रेयर सिचुएशन बिकॉज ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं है। हियर ही वॉन्ट्स टू स्टे दैट if everything comes to stand still, it will be a very different moment. If all the engines like the vehicles and machine stop, then there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. People will not be in a rush to achieve material things one after another. ह्यूमन बीइंग की ये सबसे बड़ी कमजोरी कहें या उपलब्धि कहें कि हम एक के बाद एक दूसरा टारगेट सेट करते हैं एंड वी ट्राई टू अचीव देम एट एनी कॉस्ट। सो अगर सब कुछ रुक जाएगा देन वो अचीवमेंट की जो रेस है वो भी बंद हो जाएगी। फर्दर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल ऑल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म वेल्स इन द सी। यहाँ सिर्फ वेल्स की बात नहीं है, ऑल अदर एनिमल्स जिनका हम हंटिंग करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वो हमें बंद करना है। दिस मीन्स दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स। हियर ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वेल विच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फूड और ट्रेड। He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. For this, he gives the example of the man who gathers salt, whose hands are hurt. Here, he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attending such materialistic थिंग्स। अपने लग्जरीज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो हम मटेरियलिस्टिक गेन के रेस में पड़े हुए हैं, पोएट वांट अस टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट। हम अपने आप को देखें कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन द रेस ऑफ गेटिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है? सॉल्ट कलेक्टर का, जो सॉल्ट का काम करते हैं। दे हैव देयर hands torn up by the working in collecting the salt. So उनको टाइम मिल जाएगा अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए अगर आप सब कुछ रोक देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द लिटरेरी डिवाइस। यहाँ पर वी वुड could be an exotic moment. You can see the letter O. So here it is assonance. We would, the same initial sound W. Now sudden strangeness, S sound. His, hers, hand, H sound. So all these three are alliteration. Now the third stanza. The poet, those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trucks with death. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Green wars का मतलब यहाँ environment को नुकसान पहुँचाने से है। Today all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as mining, deforestation, letting the chemicals waste into the rivers. The poet asks us not to do so. He also requests
people not to involve in wars as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive. जो ये वॉर विद गैसेस एंड वॉर विद फायर जो हम आजकल वेपन्स यूज करते हैं, इससे होता क्या है? तो पीपल आर डाइंग फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से लोग जो होते हैं वो मरते हैं. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ विक्ट्री? अगर उसमें आप जीत भी जाते हैं, देन व्हाट इज द बेनिफिट? कि उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए लोग आपने खो दिए, कोई बचा ही नहीं. He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth. अगर हम environment को नुकसान पहुंचाते रहे और इस तरह से युद्ध कंट्रीज के बीच अगर होता रहा, तो फाइनली एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इस धरती पे लाइफ ना बचे. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemies like brothers and promote peace and harmony in the world. और यहाँ पे पोइट ने कहा है कि put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ clean clothes कहने से मतलब है कि जो हमारे पहले के कपड़े हैं उस पे उस युद्ध के क्या हैं, देयर स्टेन्स ऑफ ब्लड, तो वो हमें रिमूव करना है. एंड वी हैव टू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, वी हैव टू मेक अ न्यू बिगिनिंग विद द अदर पीपल. हम अपने दुश्मनों के साथ भी भाइयों जैसा व्यवहार करें. वी शुड स्टार्ट एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग. द पोएट wants to say that what he is promoting, जो वो कह रहा है कि वॉर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज टोटल इनएक्टिविटी. ऐसा वो पोएट नहीं कह रहा है कि आप कुछ भी ना करें. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं करने का मतलब यू शुड गिव अप ऑल द एक्टिविटीज. इट डजंट मीन सो. उसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आई वॉन्ट नो ट्रक्स विथ डेथ. ये जो वॉर या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो लोग लार्ज नंबर में मारे जाते हैं, इट शुड नॉट हैपन. नेचुरल कैलामिटीज़ में बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं, इवन वॉर्स में भी बहुत सारे लोग मरते हैं. सो पोएट ये नहीं चाहता देयर शुड नॉट बी मास किलिंग, और वो कह रहा है कि इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ कि वो टोटल इनएक्टिविटी हो जाए. वो सिर्फ ये चाहता है कि पीपल शुड नॉट die because of our any activity. Now look at the literary devices. Wars with and clean clothes. So the initial sound is same. So here it is alliteration. Next one, victory with no survivors would put on new clothes and walk about their brothers. Here you can see the letter O is prominent in all the words, so here it is assonance. Another one, this green wars, war with gases and war with fire. So here you can see the word war is being repeated. So here it is a repetition. The next stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps use silence, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the poet wants to clarify to his readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, he does not want anyone to become a non-active person. जो स्टार्टिंग में उसने कहा कि आपको कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना है. सो पोएट ये नहीं कह रहा है कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ. नॉन एक्टिव
is a person who remains idle and doesn't do anything. Here he simply means that we should stop and see the consequence of our deeds. यहाँ पे पोएट ने सिर्फ ये कहा है कि आप कुछ देर रुकें और आप ये देखें कि आपने क्या किया है in order to gain the materialistic things. The poet wants to see people being killed due to their greed for money and expansion of territories. Further, he says that people are continuously working to achieve their tasks without even thinking about their result. आप अपने गोल को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं एंड यू आर नॉट इवन वॉचिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं. आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, यू आर जस्ट रनिंग ब्लाइंडली टुवर्ड्स द गोल. They are in fear of death and therefore wants to achieve most of things before their death. Here he urges them to stop for a while and take some moment to realize on what they have achieved till now. Poet कह रहा है कि आप कुछ देर रुकें और रुक के जो आपने अचीव किया है कम से कम आप उसका तो इस्तेमाल करें, उसका यूज करें. यू शुड बी फील कि आपने क्या अचीव किया है. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. हम यहाँ सिर्फ अचीव कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग इट, यूटिलाइजिंग इट. उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे अचीव कर रहे हैं. पोएट हमें चाहता है कि हम उसका यूटिलाइज भी करें और इंट्रोस्पेक्ट भी करें कि इससे क्या नुकसान हुआ है और हमने क्या हासिल किया है. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. This will help us escape the sadness which has become so prominent in our lives. The sadness of not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. Now look at the literary devices. We were and so single-minded. So here the initial sound is W and S. So it is alliteration. And next one is enjambment. Enjambment वहाँ होता है जहाँ पे ideas change होते हैं from line to line और पैराग्राफ चेंज होते हैं बट देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड. यहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है बट आइडियाज कंटिन्यूसली एक लाइन से दूसरी लाइन में चेंज होते रहते हैं. तो ये हमारा एंड फॉर वंस कुड परहैप्स से लेके अवरसेल्व्स विथ डेथ, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें इंजैबमेंट है जहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो use of punctuation marks. Now the fifth stanza. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Now the poet suggests to the human beings that we should learn a lesson from earth. During the winters, everything freezes and becomes lifeless. But when season changes and it's the onset of a spring season, everything present in the nature, such as the trees, birds, rivers, etc., gets life. यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हम अपने अर्थ से कुछ सीख सकते हैं, एक लेसन सीख सकते हैं. क्या है? जैसे विंटर्स और समर में यू कैन सी एवरीथिंग सीम्स डेड. पूरी धरती येलोइश टर्न हो जाती है, लाइफ प्लांट्स हर्ब्स एंड सर्ब्स पूरी तरह से डेड हो जाते हैं. और विंटर में भी यही होता है, इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो, खास करके कोल्ड कंट्रीज में. तो अर्थ पूरी लाइफलेस दिखती है. बट जैसे ही सीजन चेंज होता है यू कैन सी एवरीवेयर ग्रीनरी, वो पेड़ पौधे, बर्ड्स, रिवर सब कुछ वापस दिखने लगता है. सो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि वी शुड गिव अप ऑल द थिंग्स
हम कुछ भी ना करें एंड आफ्टर सम टाइम विल सी कि विल गेट बैक टू लाइफ. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. They can try and make their life better with calmness, peace. Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet. Here quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony. After saying this, he says, I will go. He says so as he has conveyed his message to the people and wants them to be left alone to think about it and walk in the direction of peace. पोएट फाइनली कहता है कि वो 12 तक काउंट करेगा और चला जाएगा, बिकॉज उसे जो मैसेज देना था ह्यूमन बींग्स को वो दे चुका है और वो चाहता है कि आप अब उसे उसके बारे में सोचें और रियलाइज करें. सो ही इज गोइंग नाउ. With this we come to the end of this poem. Thank you.